Hey everyone, so in this video we are going to discuss JEE Mains Vector and 3D previous year questions. Okay, from 2022 to 24. JEE Mains 2024 question we have कि let alpha comma beta comma gamma be the mirror image of the point 2 comma 3 comma 5 in the line x minus 1 by 2 equal to y minus 2 by 3 equal to z minus 3 by 4, then 2 alpha plus 3 beta plus 4 gamma is equal to what? Okay, तो आपको सिंपली हमारे पास है कि इमेज ऑफ द पॉइंट 2 कॉमा 3 कॉमा 5 is alpha comma beta comma gamma about the line x minus 1 by 2 equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4. Okay, so suppose this point is a and this point is b, so we can say that this ab vector is perpendicular to 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. ए बी वेक्टर आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा अल्फा माइनस 2, ओके, देन बीटा माइनस 3 एंड गामा माइनस 5. ओके, ये आपका परपेंडिकुलर है 2 कॉमा 3 कॉमा 4 के, यानी कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, यानी कि इक्वल टू व्हाट, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. सो नाउ वी विल टेक डॉट प्रोडक्ट, सो विल गेट 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 3 बीटा माइनस 9 प्लस 4 गामा माइनस 20 is equal to 0. So we'll get 2 alpha plus 3 beta plus 4 gamma is equal to 20 plus 13, which is equal to 33. यानी कि option 4 is our correct answer. So next question we have, let A we have 2 comma 3 comma 5 and C we have minus of 3 comma 4 comma minus 2 with the opposite vertices of a parallelogram ABCD. Okay, if the diagonal BD we have I cap plus 2 j cap plus 3 k cap, then area of the parallelogram is equal to what? Okay, अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, डायगोनल से, राइट, बिकॉज एक डायगोनल गिवन है तो दूसरा डायगोनल आप फाइंड करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपन इजीली निकाल सकते हैं. तो आपके पास तो फॉर्मूला आना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, दैट इज हाफ टाइम्स d1 क्रॉस d2, where d1 and d2 are the what, diagonals. Okay, so we have a parallelogram A, B, C and D. Given that A is what, 2 comma 3 comma 5 and C we have minus of 3 comma minus of 2, and given that BD vector is given, okay, BD is given to us, so we need what, AC. This one is our D2, so this one is our D1. तो AC आप easily calculate कर सकते हो, right? So AC vector is what, minus 3 minus 2 I cap, 4 minus 3 j cap and minus 2 minus 5 k cap. So we'll get minus of 5 I cap plus j cap minus 7 k cap. तो हमारे पास AC वेक्टर भी आ गया. That's it. Now we will find what, D1 cross D2, यानी कि I cap, J cap, K cap. D1 minus of 5 1 minus of 7 and D2 we have 1 2 3. Okay, so we'll get I cap 3 plus 14 minus of j cap minus 15 plus 7 and plus of k cap we will get minus of 10 minus 1. तो यहाँ पे आ गया 14 plus 3 we have 17 I cap plus 8 j cap minus 11 k cap. Now if we'll take magnitude of d1 cross d2, which we have root over 17 square plus 64 and plus 11 square, 289 plus 64 plus 121. Okay, now we will add all the values. If we will add this one, so we have 289 plus 64 plus 121, so we'll get root over 474. Okay, root over 474, and outside we have half times d1 cross d2, which means half times root over 474, यानी कि option number 3 is our, sorry, option number 2 is our correct answer. So next question we have,
let A vector we have and B vector we have, whose magnitude is given. That magnitude of A vector we have 1, A dot B is equal to 2, and magnitude of B is equal to 4. If C vector is equal to 2 times A cross B minus 3B vector, then angle between B vector and C vector is equal to what? Okay. So we have C vector that is equal to 2 times A vector cross B vector minus 3 times B vector. Okay. देखो, if we are going with C vector dot B vector, what we'll get? 2 times A vector cross B vector dot B vector minus 3 times magnitude of B square. And this thing is what? Box of A vector, B vector and B vector, which is equal to 0. Okay. यानी कि C vector dot B vector is equal to minus 3 multiply with 4 square यानी कि 16, which is equal to minus of 48. Okay. अब देखो यहाँ पे यदि इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 48 वी हैव, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी मल्टीप्लाई विथ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12. तो आपको अब cos थीटा फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ सी चाहिए. उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सी वेक्टर तो हमारे पास है. ओके, सो सी डॉट सी फाइंड करते हैं, दैट विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर. ओके, चलिए. So C vector is equal to 2 times A vector cross B vector minus 3B vector. So C vector dot C vector is equal to 2 times A vector cross B vector minus 3B vector. Okay, dot with 2 times A vector cross B vector minus a 3B vector. If we will multiply this A cross B with A cross B, that means 4 times we have magnitude of A cross B whole square, and here we have magnitude of C square. Then if this A cross B we will multiply with B, again we will get what? Box of A B B, which is equal to 0. Similarly, if this 3B if we will multiply with this A cross B, again we will get the same thing. So next step is what? 9 multiply with magnitude of B square we have, यानी कि magnitude of C square is equal to 4 multiply with magnitude of A cross B square प्लस 9 मल्टीप्लाई विथ 16 भी है. अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर. ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी हैव 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वी हैव 4, दैट मींस 16, एंड ए डॉट बी इज गिवन 4 plus magnitude of A cross B square. So we are getting A cross B whole square is equal to 12. So substitute in this one. So we are getting 4 multiply with 12 plus 9 multiply with 16. Okay. तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? 48 plus 16 multiply with 9, 144. Okay. So 192. Magnitude of C square we have 192. That means magnitude of C is what? Root over 192. Okay, so now substitute in this one. So cos theta is equal to minus of 12 upon root over 192. So we'll get cos theta is equal to minus of 12 upon 8 root 3. Okay, so we'll get what? 3 upon 2 root 3, which means minus of root 3 by 2. So our theta is equal to cos inverse minus of root 3 by 2. Okay, cos inverse minus of 3 root by 2, which means option number 3 is our correct answer. Next question we have the distance of the point Q 0, 2, minus 2 from the line passing through the point P 5, minus 4, 3 and perpendicular to the lines R vector, we have minus of 3 I cap plus 2 k cap plus lambda times 2 I cap plus 3 j cap plus 5 k cap, and lambda belongs to R, and R vector we have that is I cap minus 2 j cap plus k cap plus mu times minus of I plus 3 j plus 2 k cap is what? Okay, so given that key a line we have to find first. Okay, a line we have to find which passes through the point P, which is 5, minus of 4, 3,
and perpendicular to these two vectors. अब देखो perpendicular to lines means what? Perpendicular to their direction ratios. So if we will take cross product of these direction ratios, that is A vector we are saying 2 I cap plus 3 j cap plus 5 k cap, and B vector we are saying minus of I cap plus 3 j cap plus 2 k cap. If we will take cross product of these A vector cross B, we will get a line, vector, which is parallel to a required line. Okay, now? So our target is what? We will find A cross B. I cap, j cap, k cap, 2, 3, 5, minus 1, 3 and 2. Okay. So we have I cap, that is 6 minus 15, minus of j cap, that is 4 plus 5, and plus of k cap, that is 6 plus 3. Okay. So we have minus of 9 I cap minus 9 j cap plus 9 k cap. Okay. अब given that ki this line passes through what point? 5 comma minus 4 comma 3. So equation of line we can write what? X minus 5 by, अब देखो इनमें यदि आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस ऑफ 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1, और इनको आप लिख सकते हो 1 कॉमा माइनस ऑफ 1 ऑल्सो. 1 इक्वल टू y plus 4 by 1 is equal to z minus 3 by minus of 1. Now we have to find distance of the point P, that is 0 comma 2 comma minus 2, okay, from the line this one. यानी कि we have a point Q 0 comma minus 2 comma 1, oh sorry, 0 comma, okay, 0 comma 2 comma minus of 2. From the line x minus 5 by 1 equal to y plus 4 by 1 equal to z minus 3 by minus of 1 equal to lambda. So this point is what? R. R point will get lambda plus 5. Okay. Lambda minus 4 and lambda plus 3. Minus of lambda plus 3. Now find QR vector. So QR vector is what? Lambda plus 5. Okay. Lambda minus 4 minus 2 यानी कि lambda minus 6 minus lambda plus 3 plus 2 यानी कि minus lambda plus 5. अब this QR vector is perpendicular to direction ratio of the given line, which means we will get lambda plus 5 plus lambda minus 6 and plus of lambda minus 5 is equal to 0, which means 3 lambda is equal to 6. So lambda is equal to, okay ना? जब ये QR vector is perpendicular to the direction ratio of the given line, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा. ओके, चलिए, तो लैम्डा की वैल्यू जैसे ही मेरे को मिली, दैट मीन्स दिस पॉइंट नाउ वी हैव 7, okay, minus 2 and 1. So distance easily we can QR calculate, right? So dQR distance we have root over 7 square यानी कि 49 plus 4 square which is 16 plus 9. Okay, so we have 49 plus 25, which means 9 plus 5 4, so root over 74. Root over 74 यानी कि option number 4 is our correct answer. So next question we have, if the shortest distance between the line is 6, then the square of sum of all possible value of lambda is what? Okay, so shortest distance between two line is what? If these lines are skew lines, that means we have a vector minus b vector dot with p vector cross q vector divide with magnitude of p cross q, जहाँ पे p और q हमारे क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन, एंड a and b are the passing through points. So a vector we have, that is minus of root 6 and root 6, and b vector we will get lambda 2 root 6 and minus of 2 root 6. Okay, so a vector minus b vector we will get minus of root 6 minus lambda, root 6 minus 2 root 6
यानी कि माइनस ऑफ रूट सिक्स रूट सिक्स माइनस ऑफ माइनस टू रूट सिक्स, दैट मीन्स 3 root 6. Okay, so now we have to find what p cross q, यानी कि I cap, j cap, k cap. P vector means direction ratio of the first line, that is 2 3 4, and here we have 3 4 5. Okay, so we'll get I cap 15 minus 16 minus of j cap 10 minus 12 and plus of k cap 8 minus 9. So we have minus of I cap plus 2 j cap minus k cap. So magnitude of this p cross q is what? मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा, देखो 1 + 4 + 1 विच इज इक्वल टू √6. ओके, चलिए नाउ सब्स्टिट्यूट इन दैट फॉर्मूला, सो विल गेट व्हाट √6 minus lambda minus √6 and 3√6 get multiplied with, यानी कि डॉट विथ माइनस ऑफ I cap plus 2 j cap minus k cap डिवाइड विथ √6. इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 6. ओके, इफ यू विल टेक दिस डॉट प्रोडक्ट, सो वी हैव √6 प्लस लैम्डा माइनस minus 2√6 and minus of 3√6 is equal to plus minus 6√6. That means two cases are possible. So here we have lambda minus 4√6 is equal to 6√6 or minus of 6√6, which means lambda is equal to what? Tan √6 or minus of 2√6. Now we have to square and add, यानी कि lambda square. This lambda square is what? 100 multiplied with 6, and here lambda square is what? 4 multiplied with 6. So 600 plus 24, which means 624. Okay, so correct answer of this question is what? 624. So next question we have, if the vectors a vector, b vector and c vector are coplanar. अब देखो यहाँ पे कोप्लानर का मतलब क्या हो गया? बॉक्स ऑफ दीज ऑल थ्री वेक्टर्स इज व्हाट? 0. ओके, यानी कि बॉक्स ऑफ a vector, b vector and c vector is equal to 0, which means determinant is also 0, यानी कि lambda mu 4 minus 2 4 minus of 2 and 2 3 1 is equal to 0. If we will simplify this one, we will get 5 lambda minus mu is equal to 28. Okay, now the next information is what? कि the projection of a vector on b vector is √54. देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर मीन्स व्हाट? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू वी हैव √54. ओके, √54. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज व्हाट? माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू माइनस 8 अपॉन √4 प्लस 16 प्लस 4 is equal to √54. ओके, यानी कि माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू माइनस 8 इज इक्वल टू √54 मल्टीप्लाई विथ √24. ओके, अब देखो √54 मीन्स व्हाट? 9 मल्टीप्लाई विथ 6 एंड दिस वन वाज 6 मल्टीप्लाई विथ 4. सो हमारे पास आ जाएगा 9, √9 स्क्वायर भी है, √9 यानी कि 3 multiply with 6 multiply with 2, and this one we have plus of 8, that is minus of 2 lambda plus 4 mu. Okay, so minus of 2 lambda plus 4 mu is equal to 18 to the 36. 36 plus 8 we have, that is 44. Divide with 2, so we'll get 2 mu minus lambda, 2 mu minus lambda is equal to 22. That is our equation number 2. देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 5 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 28 एंड हियर वी हैव 2 म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 22. ओके, इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस वन विथ 5, सो विल गेट व्हाट? 10 म्यू माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 110. ओके, सब्स्टिट्यूट solve this one, equation number 3 and equation number 1. So we have 5 lambda minus mu is equal to 28
and minus of 5 lambda plus 10 mu is equal to 110. If we will add, so 9 mu is equal to 138. So mu is equal to 138 by 9. Okay, so we have 5 lambda is equal to 28 plus mu, which means 5 lambda is equal to 28 plus 138 by 9. Okay, so if we will simplify this one, so lambda we will get 78 by 9. Okay, so we have to find lambda plus mu, which means 78 plus 138 by 9, which gives 216 by 9. 9 2s are 18 and 9 4s are 36. Okay, so 24 is our correct answer, and option number 3 is our correct answer for this question. Next question we have, let A vector, B vector and C vector be the three non-zero and non-coplanar vector. Let the position vector of 4 point we have A, B, C, D. Okay, with A vector minus B vector plus C vector, lambda times A vector minus 3B vector plus 4C, minus A plus 2B minus 3C and 2A minus 4B plus 6C रेस्पेक्टिवली. अब तो उसने देखो क्या कहा है, पहले तो हमें वो समझना है कि हमारे पास ABC, these are the vectors which are non-coplanar, right? But given that ki A, B, C and D 4 points we have, okay, A point, B point, C point and D point. So we can say ki this AB vector, AC vector and AD vector, AB vector, AC vector and AD vector, these are what? Coplanar. If these are coplanar, that means we can say ki box of AB vector, AC vector and AD vector is what? 0. Okay. So our target is what? First one we'll find AB vector, then AC vector and then AD vector. Okay. So we have A as A vector minus B vector plus C vector. B we have lambda times A vector minus 3B vector plus 4C vector. C vector we have minus of A plus 2B minus 3C. Okay. And D we have 2A minus 4B plus 6C. तो ए बी वेक्टर जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा लैम्बडा माइनस 1 ऑफ ए कैप, सॉरी ए वेक्टर माइनस 2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर. ओके, ए सी वेक्टर विल गेट माइनस ऑफ 2A प्लस 3B माइनस 4C, एंड दिस ए डी वेक्टर वी विल गेट ए वेक्टर माइनस 3B वेक्टर प्लस 5C वेक्टर. अब इनका बॉक्स लेना, बॉक्स मतलब डिटर्मिनेंट, यानी कि लैम्बडा माइनस 1 माइनस 2 3 minus 2 3 and minus of 4 1 minus 3 and 5 equal to 0. इस डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आएगा लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, विच मीन्स लैम्बडा इज इक्वल टू 2. ओके, सो जो लैम्बडा की पॉसिबल वैल्यू वो क्या है? 2 है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम JEE Mains 2022. Okay, before that we discussed 24 and 23. Now we are going with 22 questions. So we have a vector A I cap plus j cap plus 2 k cap. B vector we have 2 I cap minus 3 j cap plus k cap, and C vector we have I cap minus j cap plus k cap. Okay, given that कि V vector we have in the plane of A vector and B vector, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया कि अच्छा एक प्लेन वेक्टर V है which lies in the plane of A vector and B vector, that we can write what? X times A vector plus Y times B vector. Okay, now given कि the projection of, यानी कि whose projection, यानी कि the projection of V vector on C vector is what? 2 root 3, यानी कि V vector dot C vector upon magnitude of C is equal to 2 root 3. And one more information is given that V dot J cap is equal to 7. Okay, V vector dot J cap is equal to 7. Okay, तो पहला टारगेट आपका क्या हो जाएगा कि इस V वेक्टर को अपन फाइंड कर लेते हैं, दैट इज x टाइम्स A वेक्टर प्लस y टाइम B वेक्टर. ओके, यानी कि वी हैव V वेक्टर एज x टाइम्स I कैप प्लस J कैप प्लस 2 K कैप प्लस y टाइम्स 2 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस K कैप. If we will take I cap common, so we have x plus 2. If we will take J common, so we have x minus, sorry,
here you will get x plus 2y, and if we will take j common, so we'll get 1 minus yani ki x minus 3y. Okay, and if we'll take k cap common, that means 2x plus y. That is our v vector. Now v vector dot c vector. So c vector is given, that is I cap minus j cap plus k cap. So we'll get x plus 2y minus x plus 3y and plus 2x plus y. Okay, if we will simplify this one, so we have x and x cancel out, 2x plus 6y we have. Okay, यहाँ पे substitute कर दो, यानी कि 2x plus 6y upon magnitude of c, that is root 3, equal to we have 2 by root 3, which means 2x plus 6y is equal to 2, यानी कि x plus 3y is equal to 1. Okay, now one more information is given, that v vector dot j cap is equal to 7. So v vector we have this one, dot with j cap means x minus 3y is equal to 7. Two equation, two variable we have. If we will add both equations, so we'll get 2x is equal to 8, which means x is equal to 4. If x is 4, so minus of 3y is equal to 3, which means y is equal to what? Minus of 1. Now what they are saying, we have to find v dot I cap plus k cap. Okay, so x value we have 4, y value we have minus of 1, which means v vector is what? Substitute x and y in this equation. Okay, so we will get what? 4 minus 2, which means 2 I cap. Okay, x value we have 4, y value we have minus 1, यानी कि 4 plus 3 7, तो 7 of j cap. 8 minus 1 यानी कि plus of 7 k cap. So we have to take v vector dot I cap k plus k cap, which means what? 7 plus 7. Sorry, I plus. Okay, so if we will take I plus k cap, which means we'll get what? 2 plus 7, which is equal to 9. Okay, so 9 is our correct answer, इनके option 4. जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. चेक कि let a and a cap and b cap be the two unit vectors such that angle between them is what? Pi by 4. Given that a vector and angle between a vector and b vector is what? Pi by 4. Magnitude of a we have 1, magnitude of b also we have 1, which means a vector dot b vector is what? Cos of pi by 4, which means 1 by root 2. And if we have to find a cross b, because यहाँ पे देखो यूज हो रहा है a cross b का, a cross b क्या आ जाएगा? वो भी आपके पास 1 by root 2 रहेगा, magnitude of a cross b. Okay, magnitude of a cross b will get 1 by root 2. Next given है कि theta be the angle between a cap plus b cap and a cap plus 2 b cap plus 2 times a cross b. Okay, यानी कि cos theta is equal to angle between these two, यानी कि a cap plus b cap dot with a cap plus 2 b cap plus 2 times a cap cross b cap. Divide with magnitude of both, यानी कि magnitude of a cap plus b cap and magnitude of a plus 2b plus 2 times a cross b. Okay, if we will multiply this one, if we will take this dot product, so what we'll get? A cap with a cap, यानी कि magnitude of a square. Now a cap with this 2 of b cap, which means 2 times we have a cap dot b cap. Okay, a cap with this one is what? 0, because we'll get box of a b. Then b vector dot a, यानी कि b cap dot a cap, then 2 times magnitude of b square, then again b dot this thing is what? 0, because we will get what? a b b. So 0 upon as it is, that is magnitude of a cap plus b cap and magnitude of a cap plus 2 b cap plus 2 times
A vector cross B vector. Okay, that is our cos theta. देखो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे वैल्यूज, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस a कैप डॉट b कैप 1/√2 विच मीन्स √2 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 अगेन एंड प्लस 2 अपॉन दिस थिंग वी हैव a कैप प्लस b कैप, a कैप प्लस 2b कैप प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर क्रॉस सॉरी a कैप क्रॉस b कैप. ओके, अब मेरे को चाहिए क्या है यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आई विल स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हियर वी आर गेटिंग 3 प्लस 3 बाई 3 प्लस 3/√2 होल स्क्वायर and magnitude of a cap plus b cap square and magnitude of a cap plus 2b cap plus 2 times a cap b cap square. ओके, अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b. ओके, सो कोस स्क्वायर थीटा we have 3 plus 3/√2 whole square upon magnitude of a square plus magnitude of b square प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी कि a कैप डॉट b कैप, और यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, a प्लस b प्लस c का क्यूब. ओके, विच मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स, तो फर्स्ट 2 टर्म्स इफ यू विल मल्टीप्लाई विल गेट 2 टाइम्स a कैप डॉट b कैप, और रिमेनिंग टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज वाई, इफ यू विल टेक डॉट विथ दिस, so box of a b and dot of these two also a b b. Okay, so we have these. If we further simplify this one, so cos square theta we have 3 common, that means 9. Okay, and we'll get 1 plus 1/√2 whole square upon 1 plus 1 plus √2, यानी कि 2 plus √2. Okay, and inside we have 1 plus 4 plus 4 multiply with 1/2 because a cross b, magnitude of a cross b is what, 1/√2. Okay, and plus 4 multiply with 1/√2. अच्छा, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 9/2, दिस वन वी हैव √2 plus 1 होल स्क्वायर अपॉन, if we will take √2 common from this one, so we have √2 plus 1 and 4 plus 1 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 √2 we have. Okay, so 1 √2 plus 1, √2 plus 1 cancel out, so we have 9/2 √2, √2 plus 1 and rationalization of this one, यानी कि 7 minus 2 √2 upon 7 minus 2 √2 multiply with 7 plus 2 √2 which is equal to our cos square theta. Okay, so we are getting cos square theta is equal to 9/2 √2. If we will multiply this one, so we have 7 √2 plus 7 minus 4, okay, and minus of 2 √2 upon we'll get 49 minus 8. So we have cos square theta is equal to 9 multiply with, यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा 3 plus 5 √2. ओके, यहाँ पे आ गया कितना 41 मल्टीप्लाई विथ, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स्ट्रा √2. ये कितना हो गया, देखो मेरे पास 41 मल्टीप्लाई विथ 4. ओके, यानी कि 164, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 164 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 √2 3 plus 5 √2. आपको देखो वैल्यू जो हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर वो चाहिए 164 cos स्क्वायर थीटा की. ओके, 164 cos स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे, बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पे देखोगे तो इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस वन, सो 27 √2 प्लस 45 मल्टीप्लाई विथ 2, यानी कि 90 प्लस 27
√2। ओके, तो जो मेजर टॉपिक्स आपके पास सब टॉपिक्स आ रहे हैं वेक्टर के अंदर, वो एक तो आप याद कर लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ओके, एक आप याद कर लो मिरर इमेज। ओके, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑल्सो। देखो, हालांकि बॉक्स और VTP एंड STP बोथ आर नॉट इन अवर सिलेबस, बट क्वेश्चन है वो इंक्लूड हो रहे हैं, तो आप VTP एंड STP पे भी फोकस करें। ओके, थैंक यू।